رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज की अच्छी बात से। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कुरान पाक की एक आयत जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। वो दुनियावी ज़िंदगी के सिर्फ ज़ाहिरी रुख को जानते हैं और आखिरत के बारे में इनका हाल ये है कि वो इससे बिल्कुल गाफिल हैं। और आज के लिए जो हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो कुछ इस तरह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। तो क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपने दिल को बहुत ही नरम मिजाज रखें। और नरम मिजाज होने का मतलब ये है कि हम दूसरे की तकलीफ को महसूस कर सकें। तो जब हमारा दिल नरम होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी को किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाएं और किसी को भी हम किसी भी किस्म का दुख जो है वो ना दें। तो ऑटोमेटिकली जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, तो इन रिटर्न हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। Today is lecture number 4 of Unit 2, that is Vectors and Equilibrium, and in the today's lecture we will learn about the vector addition by the rectangular component method. As we have discussed the rectangular components in our yesterday's lecture, like if we have a vector, for example, first of all, we will draw the axis, the x and the y axis. And on these axes, if we consider a vector which is making an angle theta, so let us name this vector as A. So if this vector A is making an angle of theta A with the x-axis, so we can resolve this vector into the rectangular components such that it will be resolved into the two components, one as its x component and the other will be its y component. So such that we will get ax, the component of the vector along the x-axis will be named as the ax component, and the component of the vector along the y-axis will be named as ay. So this is the case in which we have splitted a vector into its component, and in this case there is only one vector. तो इस केस में हमने सिर्फ एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर दिया, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। आज के लिए हमने जो है वो स्टडी करना है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और ये हमारे पास जो मेथड है, दिस मेथड इज एक्चुअली एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली जो है वो कैलकुलेशंस के थ्रू जो है वेक्टर्स को ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ ज्योमेट्री। एंड सिंस इट इज more mathematical in nature rather than the geometrical, therefore it is regarded as more precise and accurate method of vector addition. तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से वेक्टर्स को जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मेथड से जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने एक वेक्टर कंसिडर किया जिसको हमने नेम ए दिया और उसको हमने रिजॉल्व कर दिया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इसी तरह से अब हम एक सेकेंड वेक्टर को कंसिडर करेंगे विच विल बी वेक्टर बी, और उस वेक्टर को भी हम rectangular components में जो है वो resolve करेंगे। So first of all, let us consider another vector named as b, and this vector is making an angle of theta b with
the positive x-axis. And one thing which you have to remember is the angles are always measured from the positive x-axis. So हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स जो है वो कंसिडर कर लिए, एक वेक्टर A और सेकंड जो है वो वेक्टर B, और अब हमने इन वेक्टर्स को ऐड करना है with the analytical method, with the rectangular component method. तो वेक्टर B को भी सबसे पहले हम रिजॉल्व कर लेते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. So its x component will be along the x-axis and its y component will be along the y-axis. So they will named as bx and by. The component of the vector b will be named as bx and by, the vector component along the x-axis and the vector component along the y-axis. ये तो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. वी वांट द इक्वेशन द रिजल्टेंट वेक्टर r to be equal to the vector sum of the vector a and the vector b. तो सबसे पहले तो हम इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड करके देखते हैं कि हम लोग हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इन वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं. So according to the head to tail rule, these two vectors can be added. First of all, we have to draw any one of the vectors. So let's consider the vector A to be started from the origin. So origin से हम लोग vector A को draw करेंगे, making an angle of theta A along the x-axis. And now from the head of the vector A, we will draw the vector B. So we will have to place the tail of the vector B on the head of the vector A such that it will make an angle of theta B from the x-axis. So this will be the vector B. So ये तो हमने head to tail rule के according जो है vector A और vector B को add कर दिया. और अब इनका रिजल्टेंट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वी हैव टू जॉइन द टेल ऑफ द वेक्टर A टू द हेड ऑफ द वेक्टर B एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो ये ब्लैक लाइन जो है दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. और इसका फिर हम रिजल्टेंट का जो है वो एंगल भी मेजर कर सकते हैं फ्रॉम the positive x-axis, which will be named as theta r. So ये तो हमारे पास वो केस है जिसमें हमने वेक्टर्स को ऐड किया by the geometrical method. But in the today's lecture, we will add these vectors by the rectangular component method, or we can also name as the analytical method. So the first step is to resolve these vectors into the rectangular components. So let us draw this image again. So first of all, we will draw the two axes. The vertical component and the horizontal component, x and y, and we will draw the two vectors, the vector A and the vector B, and then we will draw the resultant, which is vector R. So now resolve the vector A. We will get its two axes, A, Y, and AX. And if we resolve the vector B, then we will get BX and BY. So now
if we want to find out the x component of the resultant vector r, so the x component of the resultant vector r will be equal to the sum of the ax component plus bx component. सो रिजल्टेंट वेक्टर जो r है इसका जो x कंपोनेंट होगा वो वेक्टर सम के इक्वल होगा ax प्लस bx के. So rx will be equal to ax plus bx, or we can also write in terms of the magnitude rx I hat unit vector will be equal to ax into I hat plus bx into I hat. So the second equation will be in terms of the magnitude. So ये तो हमने equation लिख ली x component की. इसी तरह से अगर हमें इस resultant का y component लिखना है तो y component इस resultant का equal है sum of the ay plus by. So total अगर हमें ry को calculate करना है, so this ry will be equal to ay plus by, and similarly in terms of the magnitude and the direction, this will be equal to ry unit vector j, and it will be equal to ay unit vector j plus by unit vector j. So this will be the two equations which we can use to find out the component of the resultant vector. So these are the two components of the resultant vector r, which are rx and ry. And if we want to calculate the magnitude of this resultant vector, so what we have to do, we have to use the Pythagoras theorem, since it is going to make the right angle triangle. And how it is going to make right angle triangle, you can see from this figure. We are going to add the vector ax to the vector bx, so we get the resultant vector rx. And if we add ay to the by, then we get the resultant vector ry. So this will make a right angle triangle. This line is equivalent to rx, and this side is equal to ry. So as a result, this is making an angle, right angle triangle. So from the right angle triangle, if we use the Pythagoras theorem, according to the Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse side is equal to the square of the base plus the square of the perpendicular side. While the hypotenuse side is the resultant vector r, so this r square will be equal to the base, which is rx square plus ry square. And if we want to find out the magnitude of the resultant vector r, then we have to take the square root on the both sides. So this resultant will be equal to rx square plus ry square and the square root. So by using this formula, we can easily find out the magnitude of the resultant vector r. And to find out the direction, we will use the tangent ratio. So tan theta will be equal to perpendicular over base, while the perpendicular is ry and the base is rx. So from this, theta will be equals to tangent inverse ry over rx. So this equation could be used to find out the direction of the resultant vector r. And since we know that the resultant rx and ry is equals to ax plus bx and ay plus by respectively, so we can also write this above equation of the magnitude as the square root of ax plus bx square plus ay
plus by square. So this is the way of the vector addition by the rectangular components. एक बार इसको हम क्विकली जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस तरह से इसको मेथड को जो है वो यूज किया फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर. सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स कंसिडर किए, एक वेक्टर ए और सेकंड वेक्टर बी, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे थे थीटा ए और थीटा बी. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इन इंडिविजुअल वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर दिया, ए एक्स और ए वाई, एंड सिमिलरली बी एक्स एंड बी वाई. देन वी हैव एडेड the x components of the two vectors, so we get rx is equals to ax plus bx and ry will be equals to ay plus by. और इसके बाद हमने क्या किया, हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और उसके बाद हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट. और क्योंकि आर एक्स जो था वो इक्वल था ए एक्स प्लस बी एक्स के और आर वाई जो था वो इक्वल था ए वाई प्लस बी वाई के. तो इनकी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम टेंजेंट रेशियो को यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो थीटा एंगल है वो इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स. और ये एंगल जो है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो मेजर किया जाता है. तो ये तो हमारे पास हो गया वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेथड हम सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं? नो, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ द वेक्टर्स एडिशन. जैसे कि हम हेड टू टेल रूल को यूज करते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी तरह से हम इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ द वेक्टर्स. बस उसमें चेंज क्या आएगा, अगर हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है फॉर एनी नंबर ऑफ द वेक्टर्स, सो वी हैव टू ऐड the x component of all the vectors just like ax plus bx plus cx plus dx and so on, और इसका स्क्वायर ले लेंगे. and similarly we have to add their y components ay plus by plus cy and so on and its square. So हमने सिंपली क्या करना है, चाहे हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं, 10 वेक्टर्स हैं, 20 वेक्टर्स हैं, इवन 100 वेक्टर्स भी हैं, तो हमने उन सब के x कंपोनेंट्स पहले फाइंड आउट करने हैं और उनको ऐड कर देना है. तो हमारे पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा और उनके y कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करके उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आर वाई कंपोनेंट आ जाएगा और फिर आर एक्स स्क्वायर और आर वाई स्क्वायर को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. इसी तरह से उनकी डायरेक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय ax plus bx plus cx plus dx and so on. So रूल सेम है, हमें यहाँ पे x और y कंपोनेंट्स को ही जो है बेसिकली वो डील करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही डील करना है और हम सेम फॉर्मूला को यूज करते हुए एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं उनको हम उनके जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट के और उनकी जो डायरेक्शन है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is another method for the vector addition. Now we will see how we can determine the angle of the resultant vector. As I have already told you that to find the direction theta of the resultant vector r along the x-axis in counterclockwise direction, we determine the angle irrespective of the position or irrespective of the positive and the negative sign of the rx and ry by using the formula
which is theta is equals to tangent inverse ry by rx. And then we have to follow the following steps. And what are those following steps? First of all, if the two components of the vector are located in the positive axis, or we can say that in the first quadrant. If Rx and Ry both are present in the first quadrant, which means the vector R, resultant vector R is present in the first quadrant, then the measured angle theta will be equal to the resultant vector direction. So this theta will be equal to theta R. इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मींस कि आर एक्स और आर वाई जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं, सो उसके लिए हमारे पास जो हम थीटा कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से वो इक्वल होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के. सो हमें यहाँ पे कुछ भी प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से हमारे पास जो थीटा आर है वो इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली, इट विल बी इक्वल टू थीटा. बट if in the case the vector resultant R is present in the second quadrant, अगर हमारे पास जो resultant है वो second quadrant में exist कर रहा है such that it is present like this, so अगर ये हमारे पास resultant present है in the second quadrant, so in this case the angle theta which we have calculated will be different from the actual resultant vector direction. और वो किस तरह से different होगा? इस केस में हमारे पास जो x component है वो negative है और y component जो है वो positive है. सो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि x कंपोनेंट नेगेटिव हो और y कंपोनेंट जो पॉजिटिव हो, सो इस फॉर्मूला से जो हमें थीटा एंगल मिलेगा वो ये वाला एंगल होता है जो कि नेगेटिव x एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है. लेकिन हमें एक्चुअली एंगल कौन सा रिक्वायर है? हमें वो एंगल रिक्वायर है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस से इस वेक्टर तक बन रहा है. सो नाउ टू फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट vector's angle, that is theta r, we have to subtract the measured angle theta from 180 degree, because in a straight line there are 180 degrees. तो अगर हमें इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें हमारा वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, तो उसमें फिर हमने क्या करना है, हमने थीटा एंगल को 180 डिग्री से माइनस कर देना है. And the third case is if the resultant is present in the third quadrant. So if it is present in the third quadrant, it means both the x and the y values are negative. So if both the x and y values are negative, then to find out the resultant angle, what we have to do, we need this total measured angle theta r measured from the, so this theta r angle will be equal to 180 degree plus the measured or the calculated angle theta. So अगर हमारे पास जो resultant vector है वो third quadrant में present होगा, तो उस केस में हम मेजर्ड एंगल जो कैलकुलेटेड एंगल है जो कि हमने टेंजेंट रेशियो से फाइंड आउट किया है उसमें हम 180 डिग्री को ऐड कर देंगे. एंड द लास्ट केस इज इफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज प्रेजेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इफ इट इज प्रेजेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन हाउ we can find out the resultant vector's direction? Then we have to measure this angle theta r. In this case, x is positive while y is negative. So if we
get this situation, then we have to subtract the measured angle from 360 degree. So अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने इस मेजर्ड एंगल जो कैलकुलेटेड एंगल है इसको हम 360 डिग्री से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी. So this is the method, these are the steps which we have to follow while determine the angle of the resultant vector. Example 2.2 is two forces F1 equals to 15 Newton making an angle of theta 1 equals to 70 degree with positive x-axis, and force F2 is equals to 25 Newton making an angle of theta 2 that is equals to 220 degree with the positive x-axis x at a point, and we have to calculate the resultant force F of R. So first of all, we will write down the data. F1 force magnitude is equals to 15 Newton, and the angle theta 1 is equals to 70 degree, while the magnitude of the force F2 is equals to 25 Newton, and the angle theta 2 is equals to 220 degree. Now let us first draw the image of these vectors onto the Cartesian coordinate. So we have to draw the x and the y axis such that this is y-axis, vertical axis, and the horizontal x-axis. So if we first draw the force F1, which is making an angle of 70 degree, and we are drawing these images arbitrary, not according to the scale. So this first force F1 is equal to 15 Newton, and this angle theta 1 is equals to 70 degree with the x-axis. Now we have to draw the second force, which is F2, and we have to draw F2 from the head of the first force, and now its angle is 220 degree and its magnitude is greater than the force F1. So this will be making an angle of 220 degree from the positive x-axis. So theta 2 is equals to 220 degree, and we have drawn the arbitrary x-axis. So it will be easier for us to draw this vector, and its magnitude is equal to 25 Newton. And now to draw the resultant vector, we will draw it from the origin, or we can also say that we will draw from the tail of the first vector and join with the head of the last vector. And as a result, its direction will be pointed away from the origin. So this will be the resultant force F of R, and its angle will be measured from the positive x-axis, which will be equals to theta R. So this is the image of the vectors which are provided in the question. Now dear students, इस क्वेश्चन को हमने एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है इंस्टेड ऑफ द ग्राफिकल मेथड. और एनालिटिकल मेथड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इन वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स में जो है वो रिसॉल्व करना होता है. सो हमें F1 और F2 को x और y कंपोनेंट्स से उनके फाइंड आउट करने हैं. फिर हम लोग इनके x कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और y कंपोनेंट्स को ऐड करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम लोग F1 x फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होगा F1 cos of theta 1, while F1 is 15 and theta 1 is 70 degree. So F1 x will be equal to 5.13 Newton, and F1 y will be equal to F1 sine of theta 1, while F1 is 15 and sine of 70 degree, and F1 y will be equal to 14.09 Newton. So these are the x and y components of the vector F1. Now we will find out the x and y components of the vector F2. So for that, F
F2x will be equal to F2 cos of theta 2, while F2 is 25 and cos of theta 2 is 220 degree. So F2x is equal to minus 19.15 Newton. And similarly, F2y will be equals to F2 sine of theta 2, and F2 is 25 and sine of 220 degree, and this will be equals to minus 16.07 Newton. So these are the four values of the rectangular components of these two given vectors. And now we have to add up the x components to get frx. So it will be equals to f1x plus f2x, and fry will be equals to f1y plus f2y. And if you substitute the values, then you will get the answer of frx as minus 14.02 Newton, and fry will be equal to minus 1.98 Newton. So this will be the answer of the frx and fry. And to find out the magnitude of the resultant force Fr, we will use the formula which we have find out by using the Pythagoras theorem, and according to which f of r is equal to frx square plus fry square. So if you substitute the values, we will get minus 14.02 square plus minus 1.98 square. So this will be equal to 14.16 Newton. So this is the magnitude of this resultant force. And to find out the direction, we will use the tangent formula. Theta is equals to tangent inverse Fry divided by Frx. So this will be equals to tangent inverse minus 1.98 divided by minus 14.02, and the theta will be equal to 7.97 degree. But as you know, x and y values both are negative, therefore the resultant lies in the third quadrant, where the resultant angle theta will be equal to, theta r will be equals to 180 degree plus theta. So this will be equals to 187.97 degree. So this will be the direction of the resultant vector r. Example 2.3 is find the angle between two forces of equal magnitude such that the magnitude of the resultant is also equal to either of them. So dear students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वो एंगल जो कि दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और अगर हम उनको ऐड करें तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए. सो सबसे पहले तो हम इस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसकी वर्डिंग को जो है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में पहले लिखते हैं कि इसमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें कहना क्या चाह रही है. सो सबसे पहले तो यहाँ से जो हमें पता चलता है फोर्स F1 अगर हम कंसिडर कर लें, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेकेंड फोर्स F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए. So in general हम इसको नेम दे देते हैं as a force F. So ये तीनों फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं इनको हमने एक नेम दे दिया है F, just for the sake of the simplicity. So now if we draw these vectors, first of all we consider the force F1 which is acting along the x-axis, so its angle is 0 degree, while the another force F2 of the equal magnitude is making an angle of theta from the x-axis.
So these are the two forces, F1 and F2, while F1 is making an angle of 0 degree with the x-axis, while the F2 is making an angle of theta with the x-axis. And we have to find out the resultant of these two forces. So the very first step is to find out the x and the y components of these forces. So first of all, we will find out F1x, and it will be equals to F1 cos of theta 1, while F1 could be replaced by F, and theta 1 is equals to 0 degree, and the cos of 0 is 1. So F1x will be equals to F, while F1y will be equals to F1 sine of theta 1, and F1 is F, while theta 1 is 0 and sine of 0 is 0. So F1x is equals to F, while F1y is equals to 0. Then we will write down the equation for the F2 vector. So F2x will be equals to F2 cos of theta 2, and this will be equals to F cos of theta, since F2 is also equals to F, and while theta 2 is equals to theta, and F2y is equals to F2 sine of theta 2, while F2 is F and theta 2 is equals to theta. So these are the four components of these two vectors. Then we have to add the x components and the y components. So to add the x components, Frx will be equals to F1x plus F2x, while F1x is equal to F and F2x is equal to F cos of theta. And y components, for the y components, Fry, it will be equals to F1y plus F2y, and F1y is 0, while F2y is F sine of theta. So this will be equals to F sine of theta. Fr will be equal to the square root of Frx square plus Fry square. And if we substitute the values of these two vectors, then it will be equals to F plus F cos theta whole square plus F sine theta square, and also the magnitude of the resultant vector Fr is equal to the magnitude of any one of the vector. So इसको भी हम F से replace कर देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने whole square formula use करना है, since F plus F cos theta is going to make A plus B whole square, and A plus B whole square is equals to A square plus B square plus 2AB. सो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसको ओपन कर लेते हैं. सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2f इंटू एफ कॉस ऑफ थीटा, और सेकेंड टर्म जो है वो एज इट इज ओपन हो जाएगी क्योंकि वो सिंगुलर है. सो एफ स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. सो दिस एफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ से हम एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम एफ स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो है ये टर्म इक्वल होती है 1 के. सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय 1, and then the equation will be equals to f square equals to f square plus 2f square cos theta plus f square.
अब यहाँ से अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ये f स्क्वायर हमने ऐड कर दिए और बाकी की इक्वेशन को हम एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आप f स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये सारे f स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, और this will be equal to cos theta will be equal to minus 1 by 2, or theta is equals to cos inverse of minus 1 by 2. And if you find the cos inverse of minus 1 by 2, then this angle theta will be equals to 120 degree. It means that the angle between the two forces must be equal to 120 degree. In only that case, the forces of equal magnitude will have the resultant that is also equal to either of them. Dear students, your homework for today is assignment 2.2 and assignment 2.3 from your book. Kindly note down these questions so that you can solve it later. This is the end of today's lecture. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed today's lecture. If you have any kind of queries, you can write your question in the comment section. See you in the next lecture with the new topic. Till then, take care and Allah Hafiz.